Okay. So you can see my screen? Yes. Awesome. Okay. So guys, just a quick introduction what Jira is used for. So Jira is basically a software. It was originally designed to track the issues and to report a bug. But in today's time, Jira has evolved into a powerful work management tool. So for all kind of issues, use cases, then requirement specifications, all the test case management, like anything in agile software development, Jira is the like first name used in this management of all kinds of work we do in agile. So here I'll go through the project I created. For example, this is just an example. I created Team IMS code yesterday, and if I click on it, so this is a on board. I created an issue for myself, and I have created this issue. If I could open this one, so this issue I assigned it to you. So it can be anything, like as easy as this one. Gather email IDs of all the team members. So I created and assigned this issue to myself. So once this is complete, I can simply I can even assign a child issue here, and it can be anything. For example, XYZ. And I can create as many as child issue under the main parent issue. And here I can even add any description. If I want to attach any screenshots, then I can attach any screenshots from the system. And also I can link a issue to it. So here I need to provide the link of the issue, what issue it would be. Suppose this I'll go afterwards, what the Confluence page is. But if you want to link any web page, then you can also link here. And then suppose if this work XYZ is in progress, so I'll update the workflow to in progress. So anyone, suppose Shal is the person who is managing us, or he's the person who is working as a quality analyst, and he wants to see what is this task is at what stage. He would simply open this task, and he would see that this is still in progress. Right. So this is still in progress, okay? And here also I can attach any attachment, whether it's an audio, a video, or screenshots, or anything related to the issue or the task, whatever it is. And so Shall I've never used this codes and development part in it. We just use it for tracking the issue. Okay. Yeah. So here, if my task is done, then I can simply click on done, and this will be reviewed by anyone, and my task will be closed. So it basically keeps a record of everything you do in a project. Even if you have completed a task, you can simply go back to the same task to see how many hours you spent on that task, when was that issue created, how much time you spent on that task or issue to resolve the issue. So it's a very
good, I would say, very good management tool. I have worked on Asana, I have worked on Trello, but Jira is the best tool, I would say, because this is very user friendly. And to be very frank, I wasn't aware of creating a Jira account. I did it last night and I was able to because it was so simple and user friendly. So here, right now we have one project, right? Suppose I want to create another project. Suppose we are working on two projects simultaneously, right? And that project is something like for bug tracking. So this is just the example I am giving. I know थोड़ा सा अभी समझने में थोड़ा सा problem होगी. Yeah. But once you start using it, you'll find it very easy. So I think I can create any any filter I can create here, and then in that project I can search for issues. Right now we have none, but in future, like for sure, we'll have issues and stuff. So we can simply search the issues from here, and if I click here, all issues will be shown. We don't have the database right now. Else I would have shown you. So if I click on my open issues, all the issues assigned to me will be open. Any questions so far? किसी को like कोई भी question हो अभी तक you can ask. I think that was I think you're going good until now. But Actually, main thing is कि we don't have data, so I know, I understand. थोड़ा सा vague हो सकता है, हाँ. But once we start using this tool is awesome. Right. So I'll just explain what. Yeah, go ahead. Sure. No. Sorry. Go ahead. I was just trying to say that if you have any Yeah, questions, guys, feel free to Mohit, ask. anyone who wants to ask a question, please hop on. Because honestly, like I'm not a great experienced person with Jira. I always make like मैं always सब चीज मैं ऐसे करता हूँ Jira. But Jira की यही खासियत है, even if you mess up, it's totally supportive. You can search anything you want. So it's basically a very, even it's a paid tool, but it's still very useful. That's why I think अभी तक की छोटी से छोटी companies, बड़ी से बड़ी companies, they all have switched to Jira. Right. Okay, so if I click on my issues, so all the issues that are assigned to me will be open. And if I click on reported by me, then all the issues that I reported will be shown. Okay. And these will be the open issues, which I have not yet started working on. And these will be done issues, which issues are completed and are resolved. Okay. So open issues will be the ones in progress, or it will be the ones in the to-do state? So it can be in progress because it's still open. Okay. It will be in to-do state also, in progress also, because since it is still open, right? Once it is resolved and its status is upgraded to done, then it won't be in open issues. Okay. Then it would be done issues. That makes sense. Okay. Yeah. And it's very simple since these words only imply what the term means. Viewed recently. Yeah. The issues you recently viewed, resolved, which you resolved recently, updated, which were updated. Updated means suppose you created an issue and after some time you think, oh no, I need to ask the person this question, or I need to add this also in the task. So you updated that issue, right? So this is how it works. And here you can search for people. So I'll be needing your
IDs, and then we can search all of you. And these are all the apps that will be supporting. So I added a few yesterday. You can add even more anytime. So this is a very flexible tool since it's designed for agile methodology. So you can change and update anything you want anytime. So this is a very flexible tool. And if you click here on the top left, the square kind of thingy, and then here you can switch to Confluence page. Sorry, Simran, before you switch to Confluence, could you talk a little more about the assignee part of Jira? Because I think that's a very important thing to the people whom the tasks are assigned. Like हम किसी को task assign कर सकते हैं. Once it is in the done state, आप reviewer को assign कर सकते हो, you know. So yeah, I think that would be. Okay, I'll first show you how to create a task. You click on here. I'll show you. You just need to. So for a real-time task, let's create a task that you worked on, right? So I can see on the Excel, your task was to create a Jira board from scratch with the project IMS, right? And add the email ID. So let's create the tasks for everyone to do. Okay, so you just need to click on create. And so remember, I just recently created one dummy project name, and that was bug tracking. Yes. So if I see I want to create the I want to create an issue in this project, Team IMS code, and here you want to see like what is this. Yeah, yesterday I think this is something which I came across. I wasn't able to create a bug or something. Maybe I used the wrong template. I actually didn't use Scrum and I used Kanban instead. Okay, I but think anyhow, the reason behind it is very simple, that we don't have any tasks for now to create the bugs, right? So that could be a potential reason. That could be one of the reason, but I'm not sure if it is the reason. But okay, anyhow, I'll figure it out what it is. According to me, I think I switched to Kanban instead of Scrum. So maybe that could be the reason. Okay. Yeah. So Okay, guys, anyhow, Kanban or Scrum में ये difference है that Kanban is the traditional method of agile project management. जब agile नहीं हुआ करता था तब Kanban हुआ करता था और हम Kanban board use करते थे, और जब agile practice में आ गया last 8 to 10 years से, then we are using Scrum. बट अगर हम बात करते हैं कि अब हम completely agile methodology follow करते हैं, it is not true. No company as such follow a complete agile methodology. जैसे हर कंपनी में waterfall भी चलता है, ठीक है, प्लस agile भी चलता है. क्योंकि अगर आप सोचें कि अब स्क्रम है, हम फॉलो कर रहे हैं, तो agile में there is no term such as project manager, okay, बट कंपनीज में होते हैं और वो फॉलो भी करते हैं, बट स्प्रिंट्स भी लेते हैं, ठीक है. अगर इफ यू आर फाइंडिंग दीज टर्म्स जो आपको थोड़ी नहीं पता लग रही, थोड़ा सा गूगल करना व्हाट एजाइल मेथोडोलॉजी इज, व्हाट स्क्रम इज, थोड़ा सा पढ़ने की, इट्स जस्ट समथिंग वेरी थियोरेटिकल, ये आपको पता लग जाएगा थोड़ा सा. यू जस्ट नीड टू गिव इट अ रीड. ओके ओके, तो हम यहाँ इशू क्रिएट कर रहे थे, तो I'll start over, I guess. Okay, I clicked on create and this dialog was opened. Here I switched to Team IMS code project, and suppose I'm creating a task, and my task is to create Jira setup and provide Jira demo to all the team members. Okay.
सो ये तो एक मेरी समरी होगी. दिस कुड बी समथिंग शॉर्ट. And I think what I believe is this is restricted to number words, I suppose, right? Shall Sorry, what's the that? summary. Summaries में आप summary में ज़्यादा words Yes, नहीं डाल सकते, है ना? या हम लोग इसमें दो चीज डिवाइड कर सकते हैं. लाइक दिस इज व्हाट आई थिंक. लाइक हम लोग स्टार्टिंग में वी कैन ऐड लाइक इट आइदर बिलोंग्स टू द डेवलपमेंट टीम और इट बिलोंग्स टू द क्यूए टीम, यू नो. अभी के लिए तो हाँ, अभी के लिए तो हम ऐसे ही कर रहे हैं. I'm just explaining. Yeah. But उसके लिए हम we can simply change the project name. और फिर नहीं, उसमें हमें कुछ करना I'm just saying in the summary section कि आगे एक square brackets करके we can just add that this is a dev ticket, you know. या फिर ऐसे लिख दो. हाँ. ये QA ticket लिख दो. Yeah, QA ticket. the square brackets maybe. ये लो. ये start हो जाएगा ना यहाँ से. Yeah. Okay. तो description में I can add anything like कुछ भी लिख सकते हैं हम जो हमने अपनी समरी लिखी है उसको डिस्क्राइब करने में. और इसमें हम असाइनी क्या होता है, वो इंसान जिसको हम ये इशू असाइन कर रहे हैं. तो इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे शैल गांधी भी आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक इसकी ही आईडी डाली है. अगर मैं ये इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और क्रिएट कर देती हूँ, इसको ईमेल चल जाएगी. अब ईमेल कैसे जाएगी, बिकॉज जो मैंने ये आईडी बनाई है इसकी ईमेल आईडी से बनाई है. इसको नोटिफिकेशन चल जाएगी कि इसको एक इशू साइन किया है. किसने साइन किया? मैंने. सारी नोटिफिकेशन में आ जाएगा विद व्हाट, विद द समरी नेम. ओके, ऑलराइटी. Yep. और अगर इसमें हमने कुछ अटैच करना है तो सिंपली क्लिक ऑन ब्राउज एंड अटैच एनीथिंग. ओके, तो फिलहाल I'll assign it to me. And who is the reporter? Reporter is also me because I'm reporting it to myself. Label अभी हम बना लेंगे. क्रिएट करना पड़ेगा. या हाँ, लेबल हम क्रिएट कर लेंगे. फिर लेबल हम बना देंगे. बस इसमें इतना ही. Yep. और इस पे हम क्रिएट इशू. So issue was created. If I view the issue which was created, okay. अब आप देख रहे हैं ये इशू मेरे लिए ही क्रिएट हुआ है. ओके, इसमें सपोज मेरे को कोई क्वेश्चन है और मेरे को पूछना है किसी डेवलपर से या किसी से भी. फॉर एग्जांपल शेल से पूछना है तो मैं एट शेल गांधी सिलेक्ट हो गया. What do you mean by anything? I can ask him and then I can simply save here. So you would ask me now that why I am commenting on my issue only. So this is because हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें इतना याद नहीं रहता. मुझे तो बहुत जल्दी भूलता है. तो कल को मैंने क्या पूछा मैं खुद भी भूल जाऊंगी. ठीक है, तो यहाँ पे एक सारा रिकॉर्ड रहेगा हमारी जो भी कन्वर्सेशन होती है. इवन 100 टाइम्स हम एक दूसरे को कुछ पूछते हैं, कुछ भी होता है तो एक रिकॉर्ड रहेगा. और ये बहुत यूजफुल है. आप सिंपली उस टास्क के बैक में जाते हो, आप देखते हो अरे ये किस बारे में था, इससे मैंने उस टाइम क्या पूछा था. थोड़े से कमेंट्स करते हो, आपकी मेमोरी रिवाइव हो जाती है एंड देन बस आपको पता लग जाता है. Yes, so I think comment is a very important section. जो हम day to day life में जो भी work करेंगे, we will initially just comment it here कि हम लोग ने ये work किया, ये workout किया है.
Exactly. right? Yeah. So could you move this task to in progress, Simran? Sure. Yeah. So that will just give an overall view के कैसे in progress में जाता यार ये ना है. In the from the impatient भी to create हो do गई. state on the right. Okay, Yeah. yeah. Okay, so अभी मैं इस workflow को suppose I started working on it. I am working on it. So I'll update this workflow to in progress. तो अभी ये in progress हो गई है. Okay. और just in case मेरा खत्म हो जाता है तो मैं ये done कर दूंगी. Cool. And हाँ जी. Sorry, go ahead. Okay. So guys, do you see an eye over here? So what it is, suppose एक issue create हुआ है, ठीक है, और आपके related थोड़ा सा है और आपने पता लगाना है कि इसमें हो क्या रहा है. Suppose मोहित आप काम कर रहे हो, आपको चाहिए इसके बारे में जानकारी, right? So आप इसको क्लिक करोगे और आपको बता देगा कि आप कौन कौन वॉच कर रहा है. और सपोज मैं चाहती हूँ कि ये इशू ना शेल भी देखे, तो आई एड एस वॉचर्स शेल. I'll add him. Yeah. So now he'll also start watching it. Watching मतलब कुछ भी इसमें चेंज होता है. सपोज मैं कमेंट करती हूँ, हाँ कोई भी अपडेट होता है, सपोज इसका ये स्टेटस चेंज होता है, कुछ भी होता है, every damn like minute to minute detail shell will get it. Okay, so you now see how useful this feature is. इसमें हम हिस्ट्री में जा सकते हैं. अब देखो हिस्ट्री में क्या होता है, ये अब कब मैंने टू डू से इन प्रोग्रेस किया ये आपको बता देगा. किसने किया, कब किया, कितने टाइम पहले किया, सब कुछ बता देगा. और ये क्रिएट कब हुआ ये भी बता देगा. सो दिस इज अ वेरी कूल फीचर. और ऑल में भी ये सब कुछ बता देता है कि क्या क्या हुआ है. Just for my knowledge, Simran, irrespective of the team, ये free जो जीरा है उसमें हम लोग work log कर सकते हैं? ये ना शेल मुझे लगता है कि मैंने ना कैनबैन चूज किया है, तभी मेरे को ये कुछ पता भी नहीं लग रहा थोड़ा बहुत. अच्छा, मैं ना तो ट्राई करती हूँ कि if you स्क्रम. go to this three dots on the right corner, yeah, can you click that? Yeah. तो इसमें भी आई कैन क्लोन इट, आई कैन ऐड अ पेरेंट, Yeah, आई कैन मूव दिस टास्क, it does not एक्सपोर्ट. let us do that. Yeah. Yeah, right now, but I can still try Scrum Yeah, if yeah, it कोई like. बात नहीं, at your convenience. Yeah. Yeah. So let's see. Like I'll tell you ki, if it allows us. Perfect. I don't use it, but I get the notifications that the developers in our project they use it a lot. And recently they have started using it, so they log hours into it. Yeah, that's Supposedly a someone cool worked feature. worked for 4 hours, 5 hours, like whatever time that person worked on the same task. So he logs into it. So by this way, अगर suppose आप manage कर रहे हो, ठीक है, कल को लोग suppose आप लोग अपनी कंपनी शुरू कर रहे हो, ठीक है, आपको मैनेज कैसे करना है कि भाई मेरा ये बंदा वेला तो नहीं बैठा है, ठीक है, या ये भी नहीं, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें कि यार ये बंदे ने इस पे कितना टाइम लगाया या इस टास्क को करने में कितना जेन्युइनली टाइम लगता है, ठीक है. तो मैं आपको तो पता ही है शेल, तो मैं बाकियों को बता रही हूँ कि वर्कलॉग क्या है. वर्कलॉग ये है, ये जब मैंने ये टास्क बनाई, इस टास्क को कंप्लीट करने में मुझे सपोज 3 आवर्स लगते हैं, तो मैं ये जब कंप्लीट करूंगी तो मैं वर्कलॉग डाल दूंगी कि मेरे को इस टास्क को 3 मिनट्स इवन 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स लगे या 3 आवर्स 30 मिनट्स लगे, तो अप्रॉक्स टाइम में डाल दूंगी, ठीक है. और उसमें वो अपडेट हो जाएगा कि ये कितना टाइम लगा इसको, ठीक है. अभी तो ये कल मैंने जैसे बनाया तो ये हमारी कंपनी के लिए नहीं है, अपना थोड़ा पर्सनल यूज के लिए, कमर्शियलाइजेशन में हम इतना कमर्शियली यूज नहीं कर रहे, तो तभी ये चार्ज करते हैं बिकॉज जीरा भी फिर अपना इतना सारा डाटाबेस कहीं इकट्ठा करता है ना. आई थिंक क्लाउड वगैरह पे कहीं करता होगा. Yeah, I think पता नहीं. this is a on-prem. This is not the cloud version.
ये वाला तो नहीं, Yeah. जो the one will buy if we want to, the company यूज करती है, because उसमें तो बहुत सारा डाटा होता है. I don't know how much it costs, but ज्यादा ही होगा. Okay, so I think with Jira के related किसी को कोई question, feel free to speak up क्योंकि like कुछ भी पूछो यार, हम सारे एक जैसे कुछ भी हैं. पूछो, कोई बात नहीं, क्योंकि यही आपको रोज डे टू डे लाइफ में मैनेज करना है, राइट? और ये बहुत इजी है. अभी तो जैसे माय बैड अगर मैं थोड़ा समझा नहीं पाई, बट ये बहुत इजी है. अगर आप लोग भी करेंगे, आई एम श्योर आपको पता लग जाएगा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. और ये सब अभी तो आया शैल यार. इससे पहले ना बेस कैंप होता था यहाँ पे, जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर थी ना, तो वो भी अच्छा था, ठीक है, पर वो इतना यूजर फ्रेंडली इतना नहीं था. था अच्छा, बट ये जीरा टोटल गेम चेंजर है. सही बात. Even Jira, I think people in sales also they use it. Yeah. Because it's very Everywhere. It's everywhere. everywhere. Yeah, yeah. So it's kind of cool tool. Yeah. So let's move on to Confluence really quick. Yeah, sure. Just give me a minute. थोड़ी देर बाद. Hello. Guys, just a minute. टीम मेंबर्स की डिटेल्स डाली, इसमें आपने सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स डाली, इसमें आपने प्रोजेक्ट असाइन किया, इसमें आपने प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे मैंने बताया कमेंट सेक्शन में बातें करी, इसी में आपने लाइक every damn thing which you can do is something Jira is all about. So इसमें क्या होता है, आपने जैसे मैंने ये इशू क्रिएट किया, ठीक है, ये इशू मोहित आप मुझे असाइन कर सकते हो, ठीक है, क्रिएट करके, रादर देन आप मुझे मैसेज करो. सपोज अगर हम स्लैक भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी यूज कर रहे हैं, वो एक टाइम तक पीछे जा जाके हम क्या चैट्स देखेंगे कि आपने मुझे क्या बोला था. इसमें क्या होगा, जैसे ये है प्रोजेक्ट्स, मैंने दिखाया था कि मैं देख सकती हूँ कि मुझे क्या असाइन हुआ, राइट. सो इफ आई गो टू माय वर्क, सो मेरा ही देखो, मेरा अभी टू डू लिस्ट में है कि मुझे ये करना है, ठीक है, और ये इन प्रोग्रेस है, और इसमें मेरा है कि मैं क्या कर रही हूँ. हाँ जी. तो ये कंप्लीट मैनेजमेंट टूल है. सपोज आप क्यूए हो, ठीक है, यहाँ शेल क्यूए है, शेल टेस्टिंग कर रहा है, शेल को एक बग मिलता है, ठीक है, वो एक अलग टूल लाइक बगजिला या मेंटिस वगैरह, ये पुराने ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं टूल्स, इस पे अगर जाके करता, वो आप अलग खोलते टूल, अलग उसमें से आपको नोटिफिकेशन आती. इसमें एक ही जगह आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी, एक ही जगह सब मैनेजमेंट होगी हर चीज की. तो आपको कहीं भी यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे है. तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, वो भी यहाँ पे है, आपने किस पे काम करना है वो भी यहाँ पे है, ठीक है, आपने इवन किसी से कुछ पूछना है वो भी आप कुछ पूछ सकते हो. सो एक ये कंप्लीट मैनेजमेंट टूल है. उसमें आप अपने बग्स भी असाइन कर सकते हो, बग्स को ट्रैक भी कर सकते हो कि ये बग निकला था और इसका क्या हुआ है. तो like with the passage of time you will learn a lot more features in this. Yes. Okay. And the functionalities of Jira can help us with our unique needs, I would say. Great. Okay. So feel free to explore it anytime. There are a number of templates. Just feel free to explore it, or you can watch a YouTube video for it. मैं सच बताऊं तो मैंने भी अभी कल ही क्रिएट किया, तो इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली. इट विल टेल यू ओके दिस इज दिस एंड देन यू कैन गो अहेड विद इट. सबसे बेस्ट मुझे इसमें लगता है कि इसमें टेस्ट केस मैनेजमेंट भी होती है. आप टेस्ट केस क्रिएट करते हो, आप वो भी इसमें कर सकते हो. दो द कंपनी आई एम वर्किंग इन यूजेस अ सेपरेट सॉफ्टवेयर, दैट इज व्हाई, दैट इज बिकॉज उसमें हम थोड़ा जो टेस्ट केसेस लिखते हैं वो उसके लिए लिखते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट्स के लिए लिखते हैं, तो वी यूज फंक्शन एंड स्टफ. बट इसमें आप टेस्ट केस हम लोग डेवलप करते हैं, वो आप टेस्ट केस लिखते हो.
ताकि हाँ हम जी, डेवलप हाँ कर जी, पाए। हाँ हमारा लॉजिक लगता मेरा। हाँ जी। तो क्यूए टीम्स बहुत यूज करती है जीरा इश्यूज, कस्टमाइज स्क्रीन, फील्ड्स जिसमें वर्क फ्लोज, ठीक है, और यू कैन मैनेज मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटेड टेस्ट्स। Yeah. Yeah, ठीक I है, think they'll need some time to explore. Let's या give it some time. और वहाँ तक we can move directly to Confluence. श्योर। If there are no And questions. this is completely customizable, guys. You can customize any permissions so far. Like if I have to provide any permissions, you can customize it according to your needs. Yes. I hope I answered your question. Anyone else? I think I'm good. Mihika? No questions. Great. Okay. और ना चलो that I'll discuss at the end. I had an idea in my mind, but I think we can keep it for later discussion. Okay, cool. Let's move on to the next topic, and that is Confluence. Okay, guys, आप में से कोई डेवलपर है? मैं हूँ. अच्छा, ठीक है, चलो सपोज शेल डेवलपर है, हम सारे क्यूए हैं, ठीक है, और हम सारे क्यूए हैं और शेल कुछ डेवलपमेंट करता है, ठीक है। सपोज इसने एक बटन बनाया, ठीक है, एक बटन बनाया जिसको दबा के कुछ होता है, लाइक बटन दबाया, उसको प्रेस करके एक डायलॉग खुलता है, फिर उसमें से हम कुछ सिलेक्ट करते हैं, इसने वो एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी बनाई। पर अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है, या ठीक उसका है, कॉन्सेप्ट क्या है? या उसका कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली। हम्म. तो अब जैसे ये क्रिएट बटन है, ठीक है, आई विल टेक एन एग्जांपल फॉर दिस बटन। सपोज ये क्रिएट बटन है, तो ये क्रिएट बटन क्या करता है, इस क्रिएट बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ये सब शेल ने बनाया, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट शेल ने की है, बट हमें तो पता ही नहीं क्या किया है। हम क्यूए हैं, हम कैसे टेस्ट करेंगे उसकी फंक्शनैलिटी जब तक हमें कोई बताएगा नहीं। और अगर हम कहें कि ये वर्बली हमें बता दें, तो आई थिंक कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम वी कैन मिस आउट टू सम इम्पोर्टेंट थिंग्स इवन इफ वी क्रिएट नोट्स, राइट। या उसने कुछ और बताने की कोशिश की और मैंने कुछ और ही समझ लिया, then that would be a big problem. So हम ये नहीं कर सकते because हमारा गोल है less time में अच्छा काम करना, okay? So इसलिए जैसे एक एक लेमैन की एग्जांपल देती हूँ। आप माइक्रोवेव खरीदते हो, ठीक है, सपोज माइक्रोवेव आपको नहीं यूज करना होता, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल मिलता है, आप इस बटन को दबाओगे ये हो